So hey guys, what's up? Welcome back to the new stream. So in this session we are going to discuss about Indian stock analysis, where you can write down in the chat box whichever the stocks you are interested to buy, or if you are interested to know about what are the analysis of the stock, you can write down on the chat box. So we will discuss about top performing stocks, underperforming stocks. Even if you want me to analyze BTC gold, you can write on the chat box. So hey guys, what's up? Welcome back to the new stream. So in this session, voice is clear, I guess.
So now I have opened SBI stock, State Bank of India. So currently it is trading around 820 rupees. So this resistance level need to break to see a good momentum in SBI, and if this resistance level breaks, then we can expect a target of 860. So it is consolidating since April in the same range, 790 to 810. So if you look at weekly chart, there is a trend line exactly over here, and if we see a closing, this will be our first target and this will be our second target, 900. So this trend line and this support level need to be break. So if a candle closing above these zones, then we can expect a target of 860, then 900. Hello Navid ji. क्या ईद जोर है आज? क्या जोर जी जोर? कहीं को जोर नहीं? नया पीसी लिए, सब मस्त है, अभी क्या जोर? Welcome. Afternoon.
वॉइस क्लियर आ रहा नहीं अभी? So if you having less capital, this is a good stock which I have opened right now, that is IDBI Bank. So as you can see here, currently it is trading around 101 rupees. So it was 70 I think on February. Now it is trading around 101 rupees, and there is a resistance over here. That is why it is taking resistance at 100 and 105. So if this resistance level breaks, we can expect a good target of 120, 130, 140, even 188. So when it breaks this 105, we can expect the next targets. You can keep this stock in your watch list. So as of now, this is trading around 105 and 101. So this is our consolidation zone, and once it breaks above this, then we can expect a good move in IDBI Bank. So you can keep it in your watch list and you can follow. And when this level breaks, you can enter according to your convenience. So this is what I used to say in every stream, that you should observe the trends. When you observe the trends in a higher time frame, you will get a clear picture of any stock's value. Okay, see what the stock is doing. It is making lower lows. Okay, until 26 rupees, it made 17 rupees. It made lower low. Then it consolidated. Then it started making higher highs. So obviously, the next it has to make a new high. When it breaks this previous support. बीप साउंड आ रहा, हाँ वो पावर सप्लाई चला गया इधर, अभी वो यूपीएस पे चल रहा है, इसकी वजह से वो बीप साउंड आ रहा। इनके सप्लाई जल्दी आ गया तो कंटिन्यू होता, अगर ये मेरा यूपीएस का बैकअप ख़त्म हो गया तो फिर बंद हो जाता सिस्टम। ये आई थिंक 1 आवर का बैकअप आना, देखेंगे। मैं स्टार्ट करके 5 मिनट्स में चला गया। हाँ अभी आ गया, देखो तुम्हारा एक चैट में मैसेज लिखते सप्लाई आ गया, शायद अभी बंद होता। देखो बिप्सन, विमल कुमार, हेलो हेलो भाई।
भाई 000 आर ओ क्या लिख रहे हो भाई, समझ नहीं आ रहा है विमल भाई। भाई वॉइस बहुत स्लो आ रहा है। अभी आ रहा है भाई ज़ोर से, अभी मैं ज़ोर से बोल रहा हूँ। गेन बढ़ाओ, ओबीएस में बढ़ाना क्यों, कैसे बढ़ाना भाई मुझे मालूम नहीं, ज़रा बोलो कैसे बढ़ाना हो। आई थिंक यही ऑडियो इनपुट कैप्चर, ये तो मेरा मैक्स है ऑडियो इनपुट कैप्चर। हाँ ठीक है। अच्छा, कहाँ से वो विमल भाई? Okay, market you need to observe market is in which trend। आपको पहले ऑब्जर्व करना है कि मार्केट कौन सा ट्रेंड में है। इसके लिए आपको हायर टाइम फ्रेम में जाना है। इट मे बी वीकली चार्ट, मंथली चार्ट और डेली चार्ट। सो ये हमारा हायर टाइम फ्रेम है, तो हम मंथली चार्ट से पहले एनालाइज करना है, उसके बाद वीकली चार्ट में जाना है, उसके बाद डेली चार्ट में जाना है। तो हमें इधर क्या दिख रहा है, मान लो अभी हम आए मार्च 2018 मार्च, ये वीकली चार्ट है। तो हायर टाइम फ्रेम में हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे लोअर लोस बना रहा है। इसको लो बोलते हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। तो हम जैसे इसको मार करेंगे हमें क्या दिख रहा है, न्यू लो बनाते जा रहा है मार्केट। तो इस तरह का ट्रेंड को बोलते हैं हम डाउन ट्रेंड। सो डाउन ट्रेंड में हमें इन्वेस्ट नहीं करना है या ट्रेड भी नहीं करना है, इसको गिरने देना। डाउन ट्रेंड होने के बाद मार्केट अभी भी डाउन है, क्योंकि यहाँ पे लो था, इसको ब्रेक किया, यहाँ पे नया लो बनाया, फिर इसको ब्रेक किया, यहाँ पे नया लो बनाया। अभी हमको क्या करना है, डाउन ट्रेंड खत्म होने के बाद भाई डेली चार्ट से मालूम पड़ जाता है। हाँ भाई वही डेली चार्ट से मालूम पड़ जाता है आपको, डे चार्ट में भी आप देख सकते हो। मैं वीकली मंथली चार्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि और थोड़ा आपको क्लैरिटी मिले। आप अगर स्विंग करते हो तो आपको डेली चार्ट इज इनफ। तो डाउन ट्रेंड खत्म होने के बाद आपको वेट करना है कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन पे जाएगा। हम इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं, एक ही सेम प्राइस से ही ऊपर नीचे होगा। उसके बाद जब ये कंसोलिडेशन फेज खत्म होता है, उसके बाद अगर एक न्यू हाई बनाता है, उसके बाद फिर से लो बनाता है, उसके बाद हायर हाई बनाते जाएगा, तब क्या आता है, मार्केट डाउन ट्रेंड से कंसोलिडेशन, उसके बाद अप ट्रेंड पे कन्वर्ट होता है। तो आपको इस हायर लोस में एंट्री करना है, ना कि इस लो पे, ना या कंसोलिडेशन लो पे। मार्केट को कंसोलिडेशन होने के बाद अप ट्रेंड के स्टार्टिंग में हाई पे भी एंट्री नहीं करना है। मार्केट को कंसोलिडेशन ब्रेक करने दो, उसके बाद फिर से वो नीचे आएगा, और फिर जब प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक रिट्रेसमेंट में नीचे आएगा, इस जगह पे आपको एंट्री लेना पड़ेगा। दिस इज द राइट वे टू एंटर इन स्टॉक। स्टॉक के लिए सही है वीकली चार्ट। हाँ राइट, मैं स्टॉक का ही बात कर रहा हूँ ना भाई, इसलिए मैं वीकली चार्ट में एनालाइज करके बता रहा हूँ। तो आपको अप ट्रेंड, जब मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा, अप ट्रेंड होने के बाद जब भी कंसोलिडेशन का फेज ब्रेक होगा, उसके बाद ऑब्वियसली सब लोग यहाँ पर एंट्री कर देंगे कि कंसोलिडेशन में यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया, यहाँ पे एंट्री मारो। नहीं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री लेंगे तो ऑब्वियसली मार्केट को ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट या पार्शियल सेलिंग आना ही है, इसको आने दो। उसके बाद फिर से मार्केट जब ऊपर जाएगा ना, तभी भी एंट्री मत लो, क्योंकि उसको एक न्यू हाई बनाने दो, तब हमको कंफर्मेशन होगा कि ये अप ट्रेंड है, कि अप ट्रेंड चालू हो गया है। उसके बाद जब मार्केट रिट्रेसमेंट में आएगा, यहाँ पे एंट्री लो।
अगर आपकी एंट्री यहाँ पे मिस हो गई है तो उसको हाई बनाने दो, नेक्स्ट ये प्रीवियस हाई था, ये न्यू हाई था, उसको न्यू हाई बनाने दो, उसके बाद फिर से वो नीचे आएगा एक रिट्रेसमेंट में, आप यहाँ पे भी एंट्री बना सकते हो। यहाँ पे देखो एक और कॉन्सेप्ट भी वर्क करेगा, यहाँ पे रेसिस्टेंस टर्न्स इनटू सपोर्ट। मान लो आप, अभी ये हमारा रेसिस्टेंस था 61 रुपीज़ का, तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, नीचे गया, अभी यहाँ पे एक सेलिंग जोन था, यहाँ से नीचे आया, फिर से वापस इसी जोन पे जाने के बाद नीचे आया। जब ये सेम लेवल मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है, सिर्फ वापस जब यहाँ पे न्यू हाई बना के नीचे आ रहा है, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, रेसिस्टेंस लेवल था, अब ये रेसिस्टेंस लेवल क्या हो गया, सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है। जो रेसिस्टेंस था पहले, यहाँ पे सेलर्स नीचे गिरा रहे थे इस लेवल, इस जोन से, जब यहाँ पे ब्रेक हो गया तो ये रेसिस्टेंस की वैल्यू खत्म हो जाती है, अब ये रेसिस्टेंस बनता है सपोर्ट। जब भी यहाँ पे आपको फिर से मार्केट गिरने के बाद इस जोन पे कहीं भी एक बुलिश कैंडल, बुलिश सिग्नल मिलता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम इनसाइड कैंडल, बुलिश इनसाइड कैंडल, ठीक है, बड़ी ग्रीन कैंडल को एक छोटा ग्रीन पैक कवर कर दे, तो यहाँ पे भी इस कैंडल के क्लोजिंग पे भी आप एंट्री बना सकते हो, ठीक है। हमें 3 कंफर्मेशन मिला है हमको स्टॉक में एंट्री करने के लिए। पहला कंफर्मेशन क्या था, कंसोलिडेशन के बाद हायर हाई बना रहा है, उसके बाद रेसिस्टेंस को भी ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, न्यू हाई बनाया है, उसके बाद थर्ड कंफर्मेशन, और इस कैंडल से हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो आप कितना अच्छा हमको मूव मिला है भाई। एसएमए स्टॉक सिलेक्शन के लिए सही है, हाँ भाई, वो आप इंडिकेटर यूज कर सकते हो कोई भी, मैं प्राइस एक्शन के तौर पे बता रहा हूँ कि सिर्फ ओनली प्राइस एक्शन पे हम कैसे एक स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे एंट्री ले सकते हैं स्टॉक में, कोई भी, इट में भी इन्वेस्टिंग हो सकता है, इट में भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो सकता है, कोई भी हो, ये प्राइस एक्शन के तौर पे। आप अगर आप कंफर्मेशन चाहिए तो आप आरएसआई का भी यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे ओवरबॉट जोन है या ओवर सोल्ड है, आपको आरएसआई में पता चल जाता है। आपको इंडिकेटर में जाने का, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई, इसको टाइप करेंगे तो आपको नीचे ये थोड़ा छोटा सा ग्राफ दिख जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करने का, सेम टाइम फ्रेम पे, और इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग के रहने का, इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में कुछ चेंज नहीं करने का। तो यहाँ पे आरएसआई क्या दिखाता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ट, अभी कोई भी आप चार्ट देख रहे हो उसका स्ट्रेंथ क्या है, कैसा है। तो इसमें मेजर जो नंबर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं 70 और 30, ठीक है, और ये 50 होता है मिड जोन, मिड रेंज, हाई रेंज, लो रेंज, मिड रेंज। तो जब भी मार्केट 30 के आसपास होता है उसका मतलब होता है कि मार्केट में ओवर सोल्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है ऑलरेडी, 30 के आसपास रहता है, तो वहाँ से हमें एक बाइंग आ सकती है, ये हमको आरएसआई बताता है। मैं तो एमएस से करता हूँ, अच्छी बात है, ठीक है, वो भी हम आप उसी से भी कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि आरएसआई भी है, एक फैक्ट इंडिकेटर है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आरएसआई हम 30 के आसपास में दिखता है तो हमें क्या सोचना है कि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारा सेलिंग हो चुका है, ओवर सोल्ड जोन बोलते हैं इसको, ठीक है, दिस इज आवर ओवर सोल्ड जोन। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ओवर सोल्ड है, इसका मतलब हमें एक और कंफर्मेशन मिलता है कि यहाँ से बाइंग आ सकती है। उसके लिए आपको यहाँ पे कैंडल का कंफर्मेशन लेना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा कैंडल बन रहा है वीकली में या डेली चार्ट्स पे, ठीक है। और ये हम 50 को हम बोलते हैं मिड रेंज। मिड रेंज मतलब जब भी मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है या कंटिन्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ मार्केट कहाँ से नीचे गिरा था, 70 से नीचे गिरा था, ठीक है। मार्केट 70 का मतलब क्या है, ओवरबॉट, इसमें बाइंग, इस स्टॉक में बाइंग ओवर हो चुका है, मैक्सिमम बाइंग आ चुकी है, ठीक है। जब 70 पे आता है वहाँ से मोस्ट प्रोबेबली मार्केट को नीचे आना चाहिए, क्योंकि ओवरबॉट हो चुका है तो सेलिंग आना चाहिए मार्केट में, ठीक है। अभी ये सेलिंग कहाँ तक आई है, 50 तक आई है, हम देख सकते हो 50 तक, ठीक है। यहाँ से 2 चांसेस हो सकते हैं, या तो कंटिन्यू करके 30 तक आ सकता है, या इस 50 का सपोर्ट से और बाइंग आ सकती है अबव द 70, ठीक है। इसको हम मिड रेंज बोलते हैं। यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है या तो कंटिन्यूशन भी हो सकता है,
तो अभी मार्केट इसमें कहाँ पे, ओवरबॉट पे है 70 के पास, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे हमको एक रेसिस्टेंस मिल रहा है। जब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, या तो ये थोड़ा एक रिट्रेसमेंट करके इसको ब्रेक करके न्यू हाई बनाएगा, तो तब हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह हम RSI का यूज़ कर सकते हैं कोई भी स्टॉक लेने से पहले। तो यहाँ पे देख सकते हो सेम जो पैटर्न यहाँ पे बना है उसी तरह का यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है। मैं इसको अब मार्क करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं वी शेप रिकवरी। अभी इसको वी शेप रिकवरी हो ऑलमोस्ट हो गया है। उसके बाद ये क्या करेगा, एक रिट्रेसमेंट करेगा रेसिस्टेंस लेवल से। तो यहाँ पे इसको रिट्रेसमेंट करने दो। जब ये ब्रेक करेगा ना, तो ब्रेक करने के बाद भी आपको एंट्री नहीं लेना है। आपको एंट्री कब लेना है, इसको ब्रेक करके एक रीटेस्ट पे आएगा। वो रीटेस्ट कहाँ पे आएगा, इसी जोन पे हमें रीटेस्ट मिलेगा। इसको बोलते हैं हम ब्रेकआउट। इसके बाद एक रीटेस्ट पे आएगा। जब ये रीटेस्ट पे आएगा, यहाँ पे ये जो सब रेसिस्टेंस था, ये रेसिस्टेंस टर्न्स इनटू सपोर्ट बनेगा। तो यहाँ पे आपका एंट्री होना चाहिए। और नेक्स्ट टारगेट आपका प्रीवियस हाई से अब होना चाहिए, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है तो हर न्यू हाई बनाते जाएगा। तो आपका नेक्स्ट हाई पे टारगेट होना चाहिए। आप ऐसे डायरेक्टली एंट्री नहीं कर सकते। ब्रेकआउट होने के बाद आपको एक रीटेस्ट का वेट करना पड़ेगा। रीटेस्ट होने के बाद इस लेवल पे एंट्री होना चाहिए, तो तब आपका डायरेक्टली एक अप मूव मिल सकता है। डायरेक्टली आप ब्रेकआउट में एंट्री करेंगे, उसके बाद रीटेस्ट के लिए नीचे आएगा, तो आपकी एंट्री होगी 120 पे, और मार्केट एक दो दिन में आ जाएगा 100 पे। तो आपका ऑलमोस्ट कितना, 120 से सीधा 100 मतलब 20 रुपीज़। ऑलमोस्ट परसेंटेज में हम कैलकुलेट करेंगे तो 15-16% का आपका लॉस दिखाता रहेगा। तो आप हरी में एंट्री मत करो। रीटेस्ट होने के बाद यहाँ पे प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद RSI और कैंडलस्टिक्स पे केवल प्रोजेक्शन से ही कंफर्म करके एंट्री बना सकते हो।
तो अभी आप देख रहे हो IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है। IDFC फर्स्ट बैंक का स्टॉक है ये, जो करंटली चल रहा है 77 रुपीज़ पे। यहाँ पे देख सकते हो IDFC फर्स्ट बैंक में आपको क्या दिख रहा है, लो, लोअर लो, लोअर लो, ठीक है। यहाँ पे हमारा लोअर लोस खत्म हो गया है, यहाँ पे लो एंड दिस इज हायर लो, ठीक है। आपको प्राइस एक्शन में ट्रेंड के बेसिस में समझाता हूँ। मान लो ये अपना फर्स्ट कहाँ से दिखा रहा है, 2016 से दिखा रहा है IDFC फर्स्ट बैंक का, तो हम इसको फर्स्ट हाई मानते हैं, ठीक है, हाई। ये हमारा हाई है, ये हमारा लो, ठीक है। ये हमारा हायर हाई, जस्ट अ मिनट। ये हमारा लोअर लो, यहाँ पे हमारा बना है लोअर हाई, क्योंकि ये हमारा हायर हाई था, उसके बाद ये लोअर है, ये हमारा फिर से लोअर लो, क्योंकि प्रीवियस लो से और भी नीचे है। ये नेक्स्ट हमारा हायर हाई, अब यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेंड शिफ्ट हो गया। पहले से हमें लो लोअर लो लोअर लो बना था, अभी ट्रेंड शिफ्ट होकर क्या बना, हायर लो बना। हायर लो मतलब पिछला लो से नेक्स्ट हमको लो मिला जिसका प्राइस ज़्यादा था, मतलब मार्केट में यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही थी, घटते जा रही थी। मतलब 43 था पहले स्टॉक, उसके बाद उससे भी नीचे आया 31 पे, उसके बाद उससे भी नीचे आया 19 रुपीज़ पे। अभी मार्केट क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, 18 से कहाँ गया, सीधा 63 तक गया था, फिर कहाँ पे आया 30 तक आया, फिर ऊपर जा रहा है, विच मीन्स द लोअर लोस shifting into higher lows. So when the market changes from lower low to higher lows, so you should wait and observe. Okay, you should wait for next lower low, higher lows. अभी यहाँ पे higher low बना, अभी next यहाँ पे क्या बना हमें, higher high. Okay, then this is our next lower higher low, sorry, lower higher low, मतलब ये लो है हमारा, लेकिन पिछले लो से हाई पे है। सो दिस इज अवर हायर लो। सो ऑब्वियसली नेक्स्ट हमें क्या बनना है, कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहा है, अप ट्रेंड, राइट। तो नेक्स्ट हमें ऑब्वियसली हमें क्या देखना है, एक हायर हाई देखना है, ठीक है। हम यही कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, इसको ट्रेंड को कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, यही बनेगा ना हायर हाई। तो नेक्स्ट हायर हमें कहाँ बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है। तो आपकी एंट्री कहाँ होनी चाहिए, इस जोन पे एंट्री होनी चाहिए आपके। मान लो आप 60 पे एंट्री कर लेते और मान लो इस न्यू हायर हाई 120 पे भी आप एग्जिट कर लेते हो, तो आपका कैपिटल डबल है। आपका स्टॉक कितने में खरीदा था आपने, 60। आप अगर मान लो इस हायर लो पे खरीदे थे 60 पे, न्यू हाई हायर हाई बनाता है, न्यू हाई भी यहाँ पे भी बनाता है, तो स्टॉक का वैल्यू कितना हो जाता, 120। आपकी एंट्री कहाँ थी। सो दिस इज द हायर लो, उसका प्राइस है कितना, ठीक है। यहाँ पे प्राइस पे मार्क नहीं हो रहा है। आप
का नेक्स्ट अगर टारगेट मिला तो कितने में मिलेगा, हायर हाई बना रहा ना, क्योंकि प्रीवियस हाई ब्रेक कर रहा है तो फिर से एक न्यू हाई बना रहा है, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर से एक न्यू हाई बनेगा। तो मान लो आप यहाँ पे एंट्री आपकी कितनी 60 पे एंट्री है, अगर न्यू हाई भी बना लिया इस ब्रेक करके एटलीस्ट यहाँ तक भी, तो इसका स्टॉक का वैल्यू कितने पे चला जाएगा, 120 पे। एंट्री थी 60 पे और एग्जिट था 120 पे, तो कितना होगा, ऑलमोस्ट 100% रिटर्न्स जितना आपका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, एंट्री 60, एग्जिट 120। मैं इन केस बता रहा हूँ, अगर फ्यूचर में इसको ब्रेक करके यहाँ पे गया तो इन केस बता रहा हूँ, दिस इज जस्ट एन अजम्पशन फॉर एजुकेशनल पर्पज। ठीक है, सो एंट्री 60, एग्जिट ऑन 120, व्हाट इट मीन्स, your investment almost doubled, because here you bought at 60 and you are selling at 120. What is the percentage? 60 to 120, 100% returns, right? So in this way we need to analyze the stock and invest or trade in swing. When market already goes upside, you should not enter, you should enter on the higher lows with the confirmation of price action, candlesticks, RSI indicators, and if you have any other, with all those confirmation and indicator, you need to enter in a stock. So I hope you get a clear idea about how to mark and how to enter in any stock. So this is the basics of entering into any stock. Blindly don't invest or don't buy any stocks without knowing anything. By taking somebody's tip or any telegram channel, you just keep on buying without analyzing. You should learn to analyze before investing or before buying any stock or any assets. So this is the basic way to analyze any stocks. So you can do your own research on your favorite stocks or your stocks which you are interested in. And you should confirm through RSI also. See, when the stock was around 60 rupees, what was the RSI was telling? RSI was saying that I am oversold. So RSI was around 30. So this is the best confirmation. So we have two confirmation, that is, one is higher lows, the second thing is 30 at the RSI, and third confirmation you can confirm with the bullish candles. So these are the three confirmation to enter into any stock. So if you make these three confirmation, then you enter into any stock, so that you will get a good returns. So blindly investing after when market goes up is completely nonsense. Okay, if you have observed the market has moved already upside, by seeing that oh market moved from this price to this price, let us buy this stock. No, that is not the right way. When already got a momentum in the market, then when you enter there is no use, because obviously whoever bought at the bottom will going to sell the stock, then obviously we will face the losses, because people has bought at this level. When you are buying at this level. Why? Because you get to know about the stock after the stock boom to some particular price. Market already moved upside, then you are buying. When market already moved upside, obviously it has to go down, because person who are bought here at this prices, obviously this is human mind, right? They need to sell the stock, because already their buying price is at low. They bought at 53, they bought at 33, obviously they will sell at 96. Why should they hold for long? Because person whoever bought at 30
and if the stock price goes to 90, he will get profit of 200%, right? Obviously he will sell the stock. The person who bought at 50 60 range also, when the stock moved to 90 rupees, obviously he will be having around 50 to 90, means almost 100% or 90%. Definitely he will, this person will also, most of the people will sell, and this person or the number of person who bought here, most of the person will sell. Very rare person will hold it for long term. Obviously we will see the selling in the market, or we will see the market will go down in the particular stock. So you should enter when market makes higher lows. In this type of entry you should make, here you should enter, here you should enter, then only your stock will move upside from your entry. Otherwise if you enter on the top and selling at the bottom will make you losses. You should enter at the bottom and exit at the top. Buy the dip, sell the rip. So you should buy the dips so that you can sell at the top. So in this way you need to analyze in any stock before buying. So if you have any doubts regarding any other stocks, let me know in the comment box.
So if you want me to analyze any stock, you can write on the chat box, so that I will open that particular stock and will explain about it. So this is all about IDFC First Bank. So in this session we have seen about SBI Bank, uh, Max Healthcare share, IDFC, IDBI, so I hope you understood about the trends of the market and how to identify the trends and how to enter in lower higher lows, and what are the things you need to observe before entering into the stocks, and which is the indicator you should use to make confirmation before entering into the stock. And if you want to know about fundamental things, you can just scroll down and get to know about the fundamentals of the stock. So here you can see fundamentals of this stock called IDFC First Bank, and you can see the market cap 57,000 crores, which is a good sign that you can invest in this stock, because 50,000 crore market cap is nothing but a large cap whose company's stability will be high in large cap, so that you can invest in large cap companies. And in financial, as I told you again, once again I am telling you, you should check all these three things: revenue, profit, net worth. That will be according to every quarter and every yearly, the details will be given. Okay, in which our profit, revenue, net worth must be at higher highs, which means the profit must be high in the every quarter, so that we can get an idea that okay, this company is doing good profit or doing good business, so that this stock value also may go upside, because we are investing to make profit. So if you are buying at some price, the stock price must go high, so that we are making these kind of analysis and confirmations. Okay. And this share, in yesterday's stream I have explained about this shareholding pattern and what are the things you need to observe in shareholding pattern, and whose percentage must high in the shareholdings. Okay, so here you can see retail and others 55%, foreign institutions 25%, other domestic institutions 11%, mutual funds 7%. And if you want to get more idea about the top gainer, top losers, you can check in the Groww app. And if you want to access this application, you can go to my description where I have given the link of this Groww application. You can click on the link and enroll by small KYCs, and you can explore the Groww, where you can check all these details. You can watch top gainers, top losers, and most volume stocks in previous day or same day. And in chart also you can see what is the price value today, 1 week back, in 1 month back, 3 months back, 6 months back, 1 year back. Okay, you can check the previous data, you can check the price of the stock in previous 5 years, 10 years, all time, everything you can check over here. And this is F1 future and options. If you want to know about this option, I will make a separate video on this, because this future option is a big topic, we cannot explain in a short way.
If you check on BTC, now BTC is consolidating at 108. There is no momentum in BTC, so if you are trading crypto BTC, I think you should avoid as of now. Once it breaks this zone, you can plan to trade. Okay, this is an trappy zone. Don't enter in any buying or selling side. Okay, don't trade in long or short. Just ignore and close the tab. Okay, here you can see the stocks which are in news also. So this is the advantage of using the Groww app, where you can see all the details, because otherwise if you are using any Zerodha, Angel, any other brokers, you will not get all these details at the single page. So you have to go through many other websites like Indian Money and all those things. You need to check to get the news and to get the knowledge about other stocks. So here in the single broker app, you can see all the most traded stocks, which are the top gainers, top losers, and the stocks which are in news. And the best thing is you can here see the top sectors. Okay, top sectors list you can see. If you want to trade in banking sector, if you click on this banking, you can watch all banking stocks which are performing good. You can see here. And if you go to the energy sector, here you can watch all the renewable energy, non-renewable energy company stocks, and healthcare, hospitals, paramedical companies, and this kind of health sector you can see here. And FMCG, here you can check the food companies, beverages companies. Okay, similarly automobiles, telecommunication, media, entertainment, they divided the sector. So by checking to the sectors, you can check the stocks and analyze it technically and fundamentally, then you can start to invest or buy the stocks. See, if you click on this news tab, here you can see Hindustan Copper collaborates with Childs Codelco to ramp up the production. What it means? So Hindustan, this company HCL, this collaborated with Childs Codelco to ramp up the production, means to increase the production of this company. They collab with this company. So what it indicates? It indicates that they are making a collaboration with other company to increase their production. So what are the probabilities? So it is a good news or bad news? It is a good news, because it is collaborating with other company, means the production will be more. Obviously the sales will be more. So the chance of getting profit will be more, and the chance of going the stock value upside is also more. So in this way you need to check the news. You should not only depend upon the news, you should thoroughly check through technical and fundamental analysis also. This is just an indication, okay, like indicator, how you use indicator in technicals. Tata Tiago curve become costlier by up to 13,000. Market cap of 6 of topmost valued firms drops by 70,000 crores. HDFC, ICICI Bank top drags. So this kind of news you can watch in this tab only. You don't need to go to any other websites to check the news of the stocks. And top by market cap. This obviously, this is the list from whose market cap is more. Okay, this is the top by market cap. And even though we are having IPO, MTF bonds, intraday event screen, all these tools and products, if you click on the IPO,
we will get to know about IPO. IPO means initial public offering, which means I will explain you. Here also you can, okay, here also they have given what is an IPO. When a private limited company decides to go public for the first time, it launches an IPO or initial public offering. This transitions the company from being privately held to publicly traded on a stock exchange like BSE, Bombay Stock Exchange, or NSE, National Stock Exchange. So basically, IPO and initial public offering, it's like a private company. Okay, it might be any private company. So basically, this private company initial investor, who will be the initial investor? The company owner or his friends, his family, or it might be any business partners, right? So they are the only investors. Other than that, they will not having any investors. They might have taken loan or whatever to build the business, right? Now, when they grow their company to a certain level, they want more funds. They want funds from the public, so they will launch it to the stock exchange. Okay, here what people can do, from stock exchange we can buy and sell the stocks of the company. So when we buy the stocks, the amount which we pay for IPO, so these will be collected by the company and they will use for their business by offering you a particular stocks. After, when you buy the stock, they will offer you stocks or a percentage of company shares you will be having, and whatever the profit loss, you will be part of the company's profit and loss. So initially when they offer, this will be, you can see here, open, closed, upcoming, applied. Okay, see, I have not applied it to any IPO, that's why it is not showing. Currently we have no active applications. Okay, so this is upcoming, means these are the stocks like Fab India, OYO, boat. So you might have heard about the boat, airports, right? This is the boat company. Still this company is not in the list of stock market or National Stock Exchange or Bombay Stock Exchange. Okay, almost the company already made it to IPO. Now soon the dates will be announcing, then the stock will be available in all the platforms of stockbrokers. You can buy the stocks of boat also if you feel the company is good. Okay, so in this way, the new companies, new startup companies, whose there is a certain eligibility which the company must follow the rules and regulations given by SEBI, that is Security Exchange Board of India, then they can enter into the stock market. Let the people buy the stocks, and some by that the company will have raised the fund publicly. In this way, they raise the fund from publicly and they grow their business to next level, and they will offer you some percentage of shares. That will be depend upon you, how much you are buying the shares and what are the quantity of shares you are buying. So how to apply, I will explain. Okay, let us take this many of the stock. Okay, so okay, White Force, I don't know which company is this. I will show you how to apply for an IPO. Okay, so here you are seeing apply. So if you click on apply, it will ask you, SME IPOs can be risky. Companies launching SME IPOs offer limited information, experience low trading volume, face high price volatility, focus on small markets and more regulatory. So they are saying it is a risky initially. Okay, so if you are feeling this kind of notification, just don't apply it to that. Apply it to the only companies which you are familiar with, or you should know the business of the company, then only you apply to the IPOs. You should know the company, what are the business, how the company is moving, whether the company will be profitable in future or not, and what are the company's upcoming projects. You should know, then only you should apply. There is nothing more procedure to apply. Just click on the apply, then you should bid the price. Okay, so this is the bidding price, 161 for this company, Meta Infotech. I am taking an example, and minimum shares you need to buy 1600. For this company they have allotted 1600 minimum company, because minimum stocks, because per lot
they will be giving you 800 shares. So in one lot you will be having 800 shares, in two lot you will be having 1600 stocks. So minimum you have to buy 1600 stocks. Okay, for that if you bid for 161 initial price, your total amount will be 2,57,000. So if you want to buy this company's IPO for two lots, that is 1600 shares, you have to pay them 2,57,000. Continue, and you can pay through UPI, NEFT or IMPS, and still you will not be the owner of the company stock. Okay, you have just applied to IPO. Allotment will be depend upon the company whether this number of shares will allot to you or not. It will be confirmed by the allotment results. So they will be after a few days they will show you whether allotment for your shares has been done or not. You will get a confirmation. If allotted, your amount will be locked and you will be having 1600 of this company shares. If not allotted, you will get refund of the complete amount which you have paid. This is the process of applying for an IPO, that is initial public offering.
Max Healthcare, this stock has given 150% returns in just 2 years. Okay, so I don't think that there is any query left. Okay, that's it for today. I am closing the stream. Let's continue tomorrow. And if you have not subscribed yet, please subscribe to this channel and share to the friends who are interested to learn. And all the knowledge I am giving here from basics to advanced. So if you want to learn more, you can contact to the given number in the description. So thank you so much for watching.